Good afternoon everyone. Part 4 I think लेखा है पछपटे समस्ते जानी पारे यहाँ आमर 4 नंबर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन जोटा कि आपण मानकर OAVS TGT बाहरी आपण मानकर वैकेंसी आसी सारे तो ता रिलेटेड पेडागोजी जहाँ भी इंपोर्टेंट MCQ रही आम सब चैप्टर किछि MCQ ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी पिला माने प्रीवियस क्लास रे 3टा क्लास आमर सरी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्लेलिस्ट को जाइए तुम मैंने चेक करि परिबो एंड ता सहित एबे आज होउची 4 नंबर क्लासेस जोटा कि आमर CDP रो ओके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बा तमरा पेडागोजी रो प्रणाम सर पिले मु प्रीवियस क्लास रे बुधवार दिन बोधे क्लास करी एंड सही दिन कहीकि जाइली मु सार नुह पूरा मैम गोटाक एंड ये स्टिल बोधे तुम मानू सारटा भल लगुच इट्स ओके तुम डाक प्रणाम पूजा तो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जोटा भी तुम मैंने कंसीडर करूच सेटा को लेकिन आम क्लासेस करवा समस्ते टिके जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु सो बेसी लेट न करके आम आज क्लास स्टार्ट करवा प्रणाम धीरेन ठीक अच्छे आपण मैंने जॉइन हुआंतु एंड मु मोर आज फास्ट सेशन स्टार्ट करूची फास्ट यूनिट रो किछि पोर्शन नु देन सेकेंड तो ये भाव में किसी क्वेश्चन अच्छे बेसिकली आज आपंकर फास्ट यूनिट रू ही क्वेश्चंस अच्छी जहाँकि मोस्ट यूजफुल क्वेश्चंस हो पार अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स द मैच्यूरेशन रिफर्स टू व्हाट द नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बी द प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन ऑफ टैक्स सी मोटिवेशन फ्रॉम एक्सटर्नल रिवार्ड्स ना डी द एक्ट ऑफ मेमोराइजेशन कौन टा मैच्यूरेशन मीन्स व्हाट धीरेन ए पूजा ए मिशन हिमालयन ए yes you are absolutely correct option A that is the natural growth and development of an individual तो आमर जन्म पर आम भितर जो natural growth and development biological growth and development हेई थाए ताकू आमे कहि परुछे कोन ना मैच्यूरेशन आम भितर परिपक्वता सेतिकी परिमाण रे आसीची आमर माइंडसेट एंड परिपक्वता बयस अनुसार सेतिकी बढ़ी सारीची आमे गोटे रेडीनेस आम भितर आसी सारीची आम भितर मोटिवेशन डेवलप हेई पारिची नेक्स्ट बा Question number 2. Readiness in learning means what? Availability of books and materials. Only books and materials available होगा. ना B. Physical and mental preparedness to learn. Physical एवं mental preparedness रहिबा. ना C. Only teachers preparation. ना केवल टीचर का preparation रहिबा. ना D. Completion of previous class. ना previous class रा केवल completion रहिबा. 2 number B. Okay. Obviously physical and mental preparedness to learn माने गोटे चाइल्ड रो आमे रेडीनेस कहि परिया माने मेंटली एंड फिजिकली से रेडी अछि गोटे एक्टिविटीज करिया पई गोटे टॉपिक बा गोटे सब्जेक्ट बा कोनोसी गोटे आइडियाज हो ताको इजीली लर्न करिया पई बा असेस करिया पई से सेति बेले आमे सेडा को कहि परिबा जेते बेले से असेस करि पारुथबो से जिंस फिजिकल एंड मेंटल प्रिपेयरनेस को ही आमे रेडीनेस कहि परिबा खाली नुह कि आमे गोटे भलो ड्रेस अप करि दे कि गले भलो लुकिंग देखा जाउथवा ठिया हे पडिबा एंड वी आर रेडी टू लर्न बहुत पिला देखा जानती क्लासरूम रे तमे देखिथिबो कि आग लाइन में भी बसी थे एंड टीचर्स कर सब कथार मुंड हलुए हाँ 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 किंतु बुझीपार हाँ लंबा हाँ किंतु तमें से मेंटल कंडीशन सी क्लासरूम में बसते भी जाकि अमेरिका आफ्रिका कथा भावुवे से अजाघर मामुर कुआडे बुली जिबे कौन खाइबे घर को गले माँ कौन रोसई करिथिबो तो सेटा को आमे कहि परिबानी रेडीनेस टू लर्न बट फिजिकली आमे जेमती देखा जाउचे आम मेंटल कंडीशन सेया नथिबो तमे माने एबे यूट्यूब टा धरिकी बसिथिबो एबे क्वेश्चन आंसर करथिबो तुम माइंड रा 5टा कार कोन भी चलिथिबो तो सेटा को कहि परिबानी रेडीनेस बट तमे फिजिकली जेमिति फाइन देखा जाउछो मेंटली सेमिति फाइन है कि गोटे कंसंट्रेशन ने जोडा पढिबा को करूछो दैट इज कॉल्ड रेडीनेस ओके नेक्स्ट बा motivation in learning acts as what a force that energizes and sustains learning behavior b a substitute for maturation c a punishment technique d a mechanical process motivation टा कौन हबा पिले very good option A a force that energizes and sustains learning behavior next which of the following statement is true without motivation learning cannot be effective b readiness depends only on teachers efforts c maturation is not required in learning d motivation and maturation are the same
कोटा हबा पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू yes option A that is without motivation learning cannot be effective जदि आमे मोटिवेट ना है डी हेई परिबनी मिशन हिमालयन डी देचे मोटिवेशन एंड मैच्योरेशन ऑन द सेम आमे सेम हिसाब रे यूज करूचे बट दे बोथ आर नॉट सेम मोटिवेशन मे बी एक्सट्रिंसिक मे बी इंट्रिंसिक बोथ माने बाह्य बा अभ्यंतरीण किंतु मैच्योरेशन टा कोन तुमरा मैच्योरेशन परिपक्वता टोटली ऊपर बायोलॉजिकल सेटा तमरा रिलेटेड लर्निंग जहा मैच्योरेशन से या नुहे सेम थिंग्स नुहे दे आर डिफरेंट सीम्स लाइक द सेम ओके तो ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर विदाउट मोटिवेशन लर्निंग कैन नॉट बी इफेक्टिव नेक्स्ट ए 3-year-old child cannot learn writing letters mainly due to lack of what motivation readiness maturation of muscles teachers effort कोड हबो ऑप्शन ए बी सी और डी बी किए देला रे आरके बारिक बी केमती हबो से लेखि पारुनी माने एडा हबो ना मैच्योरेशन ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन तार सेति के डेवलप हेइनी सेथि लागि ही कोन हबो तार सेति की मसल्स रा परिपक्वता बा डेवलपमेंट हेइ नाही जोथि लागि कि 3 वर्षर चाइल्ड लेखिबा पई समर्थ हेइ पारु नाही तो ऑप्शन सी करेक्ट हबो ए 3-year-old child cannot learn writing letters mainly due to lack of maturation of muscles रा परिपक्वता आसी नाही बोली ही गोटे 3 वर्षर छुआ लेखि पारुनी Next ba which condition of learning is mostly influenced by external factors like rewards, praise and competition. Option A maturation, B readiness, C motivation, D habit formation. Very good. Option C that is motivation. Motivation गुड़ा का rewards, praise and competition ए गुड़ा कौन external comes under external motivation. Next, learning is possible only when केते बेले learning टा possible the learner is matured enough जेते बेले गोटे learner mature enough हे जाए the learner is ready to learn learner जेते बेले ready हे जाए learn करिया पई the learner is motivated ना all of the above all of the above थिले तो everyone obviously all of the above ही हम next बा कि which of the following best describes readiness to learning the stage when a child completed her homework or his homework. Now option B the stage when an individual is prepared physically, mentally and emotionally to learn. Now option C the stage when a teacher is prepared with teaching aids. Now D the stage when rewards are given. Code haba bile very good obviously B option कि mentally, emotionally and physically जेते बेले से ready थिबो आमे सेटा कहि परिबा readiness in learning. Next कि the Thorndike's law of readiness the learner कौन describe करे Thorndike का law of readiness learns only when he is forced ना is satisfied when ready to act and allowed to do so से सेते बेले satisfied होई थाए जेते बेले ready थाए किछि गोटे करिया पई एवं से जिंसटा करिया पई ताको allowed करा जाय ना C is satisfied when he is ready but not allowed to act ना both B and C both हवा पिला माने both B and C होची correct answer okay next बा which of the following is an example of intrinsic motivation अभ्यंतरीण जो उद्दीपना आमे कहूचे गोटे चाइल्ड मध्यरे गठन करिया पई कोटा करेक्ट ऑप्शन ए स्टूडेंट स्टडीइंग फॉर गुड मार्क्स केवल गुड मार्क पई से पढिबा ना ए स्टूडेंट लर्निंग पेंटिंग बिकॉज़ ही एन्जॉयज इट गोटे स्टूडेंट पेंटिंग करबा लर्न करे काहे कि ना से सेटर एन्जॉय करे ना स्टूडेंट अटेंडिंग क्लास ड्यू टू अटेंडेंस रूल्स से केवल अटेंडेंस रूल्स पई ही क्लास अटेंड करूची ना स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर टीचर्स रिवार्ड very good Pooja yes obviously a student learning painting because he is enjoying it next
लर्निंग एज ए प्रोसेस मेनली एम्फासाइजेस व्हाट आमे कहिचे लर्निंग गोटे प्रोसेस एवं गोटे आउटकम तो प्रोसेस हिसाब रे से कोन फोकस करी थाए ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन बिहेवियर ना इंटरनल ग्रोथ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओनली ना सी कंटीन्यूअस इंटरैक्शन ऑफ लर्नर विथ एनवायरनमेंट ना ऑप्शन डी मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स कोडा हबा बिले वेरी गुड मु न पढ़ी पारिबा आगरु समस्तंकर आंसर आसी गलानी बहुत बढ़िया ऑप्शन सी कंटीन्यूअस इंटरैक्शन ऑफ लर्नर एंड एनवायरनमेंट विथ द एनवायरनमेंट नेक्स्ट लर्निंग एज एन आउटकम रिफर्स टू व्हाट ऑप्शन ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर नॉलेज स्किल्स और एटीट्यूड बी टेम्पोररी चेंजेस कॉज्ड बाय फटीग सी mere practice without improvement d teaching effort alone बाबारे ए मिक्की पूजा आरके बारिक प्रकाश धीरेन विश्वाल ए ऑब्वियसली मु ए रुकवाड जीबी ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर नॉलेज स्किल और एटीट्यूड जेहेतु हमर चेंज ता आसला चेंज होची हमर आउटकम तो सेटा यस परमानेंट चेंज इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर रिलेटिवली व्हाट आउट के लगेई दबो प्रकाश आउरी बेटर हबो जोटा कि प्रीवियस एग्जाम रे तमरो जोड़ा एसएसबी टीजीटी रो प्रीवियस एग्जाम रे 2024 रे फर्स्ट क्वेश्चन आसी जाइथिला लर्निंग मीन्स व्हाट रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर ओके तो नेक्स्ट बा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रू आउटकम ऑफ लर्निंग कोउटा गोटे लर्निंग रो ट्रू आउटकम हिसाब रे कंसीडर हुए नाही ऑप्शन ए एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन न्यू सिचुएशन बी इंप्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सी fatigue after long study hours d development of values and attitudes कोटा हबा बिले yes option c fatigue after long study hours next जिबा सत्यवान पानी शांति खातून नुआ पिला दी जण रेस्पॉन्स ओके लर्निंग इज बोथ ए प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दिस मीन्स व्हाट जेते बेले हमें कहू लर्निंग बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ताले सेटा कान कंसीडर करे थे इट इज ओनली ऑब्जर्वेबल व्हेन टीचिंग हैपेंस बी इट इन्वॉल्व्स बोथ द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड द एंड रिजल्ट ऑफ इट सी इट इज merely memorization d it is unrelated to behavior yes option b correct answer it involves both the act of acquiring knowledge and the end result of knowledge तमे गोटे नॉलेज एक्वायर कला दैट इज द प्रोसेस को वे रे को स्टेप रे आमे गोटे नॉलेज बा कांटे कांसेप्ट को एक्वायर करूछे एंड तार एंड रिजल्ट माने आउटकम कोन आउटकम बाहरिला तमे नॉलेज टा को कोठी यूटिलाइज करि पारुछो बा केते अमाउंट रो नॉलेज टा एक्वायर कला ओके नेक्स्ट बा कि when a student learns swimming the act of practicing strokes is what learning as a process learning as an outcome not related to learning only teaching method कोन हबा बिले जेते बेले स्विमिंग सिखुची से ये एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ता कोन वेरी गुड ऑप्शन ए लर्निंग एज ए प्रोसेस तारा लर्निंग प्रोसेस टा चली से शिखुची कि स्विमिंग टाको मते को स्टेप रे केमिति को वे रे कले मु बेटर स्विमिंग करि पारिबी ongoing process okay next when the same student is finally able to swim across the pool it represents what learning as a process learning as outcome maturation motivation yes option b learning as an outcome next which of the following is true about learning as a process it is dynamic and continuous it ends after classroom teaching it is the final achievement only now it has no relation with environment कोडा बबिले ऑप्शन ए इट इज डायनामिक एंड कंटिन्यूअस इन नेचर समय अनुसार सिचुएशन अनुसार कंटेक्चुअल अनुसार एटा चेंजेबल हेई थाए एंड एटा कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ चली थाए तो जेहेतु इट इज ए प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस तो सेटा को हमें कहि परबा लर्निंग इज ए लाइफ यस मिकी लर्निंग इज कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस
Which of the following best explains learning as an outcome? कोउटा best explain करूची कि learning गोटे outcome. Writing an essay after teacher's explanation, attending a lecture without understanding, reading a chapter quickly without retention, D. Practicing without progress. Yes, option A. Writing an essay after teacher's explanation. Obviously कहीं ना जेते बेले टीचर एक्सप्लेन करूछंती तमे बुझी सारिलो तुमर आउटकम ता बाहरुची कहीं ना तमे केतिकी जिंस लर्न करिचो सेटा तमे केमिति फेस करूछो. ओके नेक्स्ट जिबा कि when students develop critical thinking skills through debates, it shows learning as what? A temporary process, an outcome reflected in intellectual ability, only motivation, imitation without understanding. कौन हम बिले? पूजा very good. Yes, Mickey, Santi, Dhiren. Obviously, option B, an outcome reflected in intellectual ability, cognitive thinking related to intellectual ability, that is called higher order thinking skill. Okay. Next hoji, learning as both process and outcome is best described by a teacher teaching mathematics, a student solving a problem step by step and finally reaching the correct solution, a learner memorizing facts without application, or option D, a student listening passively. Code haba bile? Problem solving, very good, very good. Option B, a student solving a problem step by step, is a process and for a finally reaching at the correct solution, that is called outcome. Okay. Next कि Jean Piaget is एठी गला कौन ना learning as a process and readiness to learning जोटा तमरा थिला कि basic condition of learning and तमरा कोटा learning as a process and outcome, first bit and last bit गला. एबे आसीबा Jean Piaget's constructivist theory. तो Jean Piaget is best known for his theory. तम मन आंसर आसी गलानी cognitive development. ओके स्कीमा हैला, assimilation हैला, accommodation हैला, सबु किछि Jean Piaget देई छंती. नेक्स्ट जिबा कि according to Piaget learning is what? A passive process of receiving information, na an active process of constructing knowledge, na a process of reinforcement only, na a process of imitation only. कोटा हबा बिले? Very good. Option B, an active process of constructing knowledge. Jean Piaget कहिसंदी पिला मानु को active environment रे छाड़ो से माने तांकर previous knowledge बा तांकर स्कीमा रे जहा फिट हे कि अछि सेही जिनसटा को एनवायरनमेंट सहित इक्विलिब्रियम हे कि से माने न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करिवे एक्टिवली लर्निंग बाय डूइंग मेथड माध्यम रे. ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन पियाजेट्स थ्योरी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, साइकोलॉजिकल स्टेज. आशा करूछु कि यूनिट 1 पूरा तुमरो क्लियर हे जिवो आज ऑलमोस्ट. जदि तुमरो थ्योरी आगरो क्लियर थिबो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आहुरी बेटर भाबरे आसी पारिबो. यस ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल साइकोसोशियल स्टेज. सेंसरी मोटर एबे कोठु को जाए एंड प्री ऑपरेशनल कोठु को एज जाए एंड फॉर्मल ऑपरेशन कोठु को जाए. यस सेंसरी, प्री, कंक्रीट एंड फॉर्मल. 0 to 2 मिकी कहले. ओके 0 to 2 देन प्री ऑपरेशनल कोठु को जाए 2 to 6, 2 to 7, 7 to 11, 2 to 7, then concrete होचे 7 to 11 and 8 11 onwards. जेते कि परीक्षा रे पढुचे 2 to 7 दोची बिले 2 to 6 दोउनी. सो प्लीज काइंडली कंसीडर इट. 2 to 6 दोउनी से एका कथा तमे 2 to 6 जानि छ माने 2 to 6 7 एग्जाम रे आसी छ माने तमे आराम से बाढे देई जिवो. ओके
Next, the stage in which a child develops object permanence is called what? Pre-operational, sensory motor, concrete operational, formal operational. कोड हवा पिले B right. Shanti Khatun. Yes, obviously sensory motor object permanence आसी थाए. Next, egocentrism is a characteristics of which stage according to Jean Piaget? Sensory motor, na pre-operational, na concrete operational, na formal operational. Egocentrism. Yes, language development है थाए प्रकाश. Very good. Pre-operational stage called egocentrism. Very good. Next, conservation of volume and number is achieved in which stage? Sensory motor, na pre-operational, na concrete operational, na formal operational. पिले आमे एबे जो गुडा कबे डिस्कशन करूचे each one characteristics of each stage. Concrete हो, formal हो, pre हो, sensory हो, सबुरा गोटे गोटे characteristics according to Jean Piaget stage. Okay, stages of development. Obviously concrete operational. Next, hypothetical deductive reasoning appears in which stage? Sensory motor, pre-operational, concrete operational, formal operational. तो तुम्हें माने यही characteristics गुडा को जानी ले तुमको आ कष्ट पड़िबनी कि ना को स्टेज रे कौन कुहा जाए फॉर्मल माने कौन कंक्रीट माने कौन प्री माने कौन सेंसरी मोटर माने कौन यस फॉर्मल ऑपरेशनल तुम तरफ ही आंसर आसी जाउची मते आ दरकार नाही तुम मानको बेसी एक्सप्लेन करिवे राइट नेक्स्ट बा कि according to Piaget the process of fitting new information into existing schema is called what? Accommodation, assimilation, equilibration, adaptation. Yes, assimilation. आ जो जिनसटा को आमे डायरेक्ट न्यू जिनसटा को मॉडिफाई करिबा modification that is called accommodation. माने रखी था just गोटे गोटे difference. Okay. Next, when an existing schema is changed to deal with new information, it is called what? Equilibration, assimilation, accommodation, na reinforcement. Obviously accommodation. मॉडिफिकेशन वर्ड आसिला चेंज आसिला मीन्स अकोमोडेशन ही आसिला माने ए गोटे गोटे हिंट्स रु ही हमें आखि बुझी करि दबा कि इट्स अकोमोडेशन ओके नेक्स्ट इक्विलिब्रेशन इन पियाजेट्स थ्योरी रिफर्स टू व्हाट इक्विलिब्रियम बाय इक्विलिब्रेशन माने कोन द बैलेंस बिटवीन मुको कियण कहलिनी असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन ना रेनफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रेस्पोंसेस मेमोरी डेवलपमेंट टीचर्स इवैल्यूएशन प्रोसेस कोन हबो बिले Option A, the balance between assimilation and accommodation. Next, which of the following reflects Piaget views of a child? A miniature adult, an active learner who constructs knowledge, a passive recipient of information, a blank set to be filled by teacher. Very good. Dhiren, Santi, Prakash, Pooja. Yes, an active learner who constructs knowledge. Option B is the correct answer. Next, which of the following best illustrate a child in the pre-operational stage? Option A, a child who believes the moon follows him whenever he goes. B, a child who understands conservation of water. C, a teenager solving algebraic equation. D, a baby searching for a hidden toy. Kote haba bile? Obviously, जेतेबेले गोटे चाइल्ड बाइक रे बसिकी जाउथो बिले मु सेही जिनसटा मु निजे भी भाबुथली हैला जेतेबेले छोटो बेले बापांगा बाइक रे मु भी बसिकी जाए माने जेतेबेले मु भी सही स्टेज रे थिली बट एबे मु पढिले भाबुची ए जिनसटा तुम मानक सहित भी हेइथिबो कि मु जेतेबेले छात ऊपर चले मु मो मामा को पचारबे मामा आ कोन मु जुआडे जाउची चांदटा मो ऊपर ऊपर मो मुंडो ऊपर काहे जाउची माने हमें उंडेले मुंडो ऊपर लागे एमदे बापांगा बाइक रे संध्या बेले जेतेबेले जाउथबे मो एमदे ऊपर को आंटा करी गनेथिबी मु भाबुथिबी कि मो संगरे संगरे जन्नटा भी मो संगरे संगरे घुरुची तो
सही जिनसटा सेटा आम समस्त सहित हुए कि आमे भाबू आमर से जो इगोसेंट्रिज्म फिल्मटा आसे कि आमे जुआडे जाउछु सी आम सहित मध्य सही जिनसटा जाउछि यस ऑप्शन ए ही करेक्ट हवा ए चाइल्ड हु बिलीव्स द मून फ्लोज इन व्हेनेवर ही गोज से जुआडे जाउछि मूनटा से एडे जाउछि नेक्स्ट द कांसेप्ट ऑफ डिसेंट्रेशन इज अचीव्ड इन सेंसरी मोटर स्टेज पी ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज डिसेंट्रेशन को स्टेज रे आसी थाए वेरी गुड मिकी पिलेटी डिसेंट्रेशन कथा पचाइछि कंक्रीट ऑपरेशनल डिसेंट्रेशन सेंट्रेशन नुह सेंट्रेशन हेले प्री ऑपरेशनल किंतु डिसेंट्रेशन हेले कोन हबो कंक्रीट ऑपरेशनल माने जिनसटा को डिसेंट्रेशन विच्छुरित काहे की हेछि केमिति डेवलप हेछि छुआ बुझी पारुछि सेंट्रेशन माने से बुझी पारुथबो जदी तमे ओडे बॉल लु जो हमें वॉल्यूम कथा पढेले जदी बाहर कर देलो तले से बुझी जबो कि सेटा पळेला आ थरे फुकी देले सेटा हेई पारिबोनी से सही जिनसर भाबिबो किंतु डिसेंट्रेशन जिनसटा से बुझी पारिबो कंक्रीट ऑपरेशनल ले यस शरीर किछि कथा नाही से जिनसटा हुए टिके टिके वर्डिंग मिस्टेक रे पियाजेट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी एम्फसाइजेस व्हाट ऑप्शन ए social and cultural tools in learning, option B active involvement of the learner in constructing knowledge, C rewards and punishment as a key to learning, D only memory based learning. Very good, option B active involvement of the learner in constructing knowledge. Okay, next ba कि which teaching strategy is most consistent with Piaget's theory? Rote learning and memorization, B discovery learning and hands-on activities, C teacher-centered lecturing, D drill and practice only. Yes, discovery learning and hands-on activities is the correct answer. Next ba कि the concept of zone of proximal development (ZPD) was introduced by whom? Piaget, Skinner, ना Vygotsky, ना Brunner. Yes, option C, Vygotsky. Next, zone of proximal development refers to what? The difference between what a child can do alone and what can be done with guidance. Option B, the maximum physical growth of a child. C, the level of intelligence measured by IQ test. D, the stage of moral development. Yes, option A, the difference between what a child know and what he can do with the help of others. Next, पिला माने एठी तम मानको गोटे जिंस कहबार अछि तम माने एबे रेगुलरली मध्ये देखुथबो ऑलरेडी सब टीचर्स माने कहि सारलेनी कि हमर विद्याकर चैनल ले तमरा विद्याकर एकेडमिक्स रे एबे ऑफर चलची विद्याकर क्लासेस हो विद्याकर एकेडमिक हो इंडिपेंडेंस ऑफर जा कि हमरा 31 जाय अछि सेही जिनसटा ही पिला माने कि 799 लाइव कोर्स 499 रिकॉर्डेड क्लासेस रे 299 रहउची इंडिविजुअल कोर्सेस टीचर का पाई जोडा ऑफर अछि एंड आरआई बैच रे एबे मध्ये चलची तो जो माने नबा को भी चाहूछ ऑलरेडी नहीं नथिबो किमा नबा को चाहूछ कूपन कोड यूज करबा को चाहूछ मोर कूपन कोड होउची WIS तो SUN एठी लिखा है जो WISUN तो कूपन कोड एठी रहउची तो 10% डिस्काउंट जहा रहिची हमर प्राइस तो सही हिसाब रे जो माने इंटरेस्टेड नहीं पारिबे एंड मते पछरे के कहबेनी कि प्रमोशन गले एडा मो ड्यूटी एंड तुम मानक पाई ही गोटे ऑफर कि सार भाबी छंदी सुधीर सर किछि तुम मानक पे बेनिफिट हेई परिबो तो माने के अधिक प्राइस लागि नहीं पारुना किबा किछि भी गोटे प्रॉब्लम होउची तो एटा तुम पई बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आम मानक पई 1% जदी कोठी बेनिफिट भी रहउची आमे भाबुचे नै से बेनिफिट जगह को आमे जिबा एंड 10% इज एनफ तो किछि कथा नाही जे तुम आसी नथिली मो रोल टा मोइडी प्ले करली तुम माने जदी भाबुचो कि ना विद्याकर चैनल ले जॉइन हेई तुम माने विद्याकर एकेडमिक्स राम सहित जॉइन हेई किछि भी तुमरो बेस्ट हेई पारिबो देन कम एंड जॉइन आ तुम ए जो ऑफर अछि सेही ऑफर को निहाती यूटिलाइज करो एंड पाइबा पई 100% चेष्टा करो काहे ना ऑफर टा सब बेले आसेनी किछि लिमिटेड पीरियड आसे देन तापर फुस इट्स ओके हम एबे जीवा क्वेश्चन आंसर राउंड को एटा मध्ये तुम देखि पारिबो WISUN मोर कूपन कोड म आउ थरे भी कहि दोउची देन जो माने इंटरेस्टेड निहाती भाबरे चैनल को कांटेक्ट करके तुमे माने जॉइन हेई पारिबो नेक्स्ट बा
कि the temporary support provided to learners to accomplish a task is called what? Scaffolding, reinforcement, conditioning, equilibration. Yes, option A, scaffolding. Next, according to Vygotsky, the most important tool for cognitive development is play, language, rewards, memory. कोटा हम पिले ऑप्शन बी language and culture. Next, Vygotsky consider learning as what? An individual cognitive process only, a passive absorption of knowledge, na a social process mediated by cultural tools, a result of conditioning alone. कौन हम पिले? Yes, a social process mediated by cultural tools. Very good. Next, which of the following is a correct example of scaffolding? Teacher solves the entire problem without student involvement. Student involvement में ना teacher total solve problem. ना teachers provide hints, cues and gradually withdraws. Help as a student becomes independent. Na C, student memorize without teacher's help. Na D, teachers give punishment for mistakes. Yes, option B, teacher provides hints, cues and gradually withdraws. Help as students become independent. किए जने एडे बड़ कमेंट देइथिले कोन मु पछक हुंडिला बेल को कमेंट ही फुस हे गला. सॉरी किए कोन कमेंट देइथिला मु पढी पारिली नाही. Next, private speech according to Vygotsky is what? A sign of immaturity, a tool for self-regulation and problem solving, a meaningless habit, a way of showing intelligence. Yes, very good. Option B, a tool for self-regulation and problem solving method. Okay. Next, according to Vygotsky, play is important because why? It only entertains children. Now it helps in physical growth but not in mental growth. Now it creates a jeopardy where children can practice social roles and rules. Now it has no role in learning. Yes, option C. It creates a jeopardy where children can practice social rules and roles equally. Which of the following teaching strategies reflects Vygotsky's theory? कोटा Vygotsky का theory को reflect करूची. Option A, discovery learning without guidance. Option B, teacher centered lectures. C, collaborative learning and peer tutoring. Rote memorization. कोटा हम पिले आगो आंसर आसी गलानी. Option C, that is collaborative learning and peer tutoring. Next, Vygotsky believed that knowledge is constructed through only individually. B, through passive reception. C, through interaction with more knowledgeable others. D, only by imitation. कौन हवा? एंटा उड़ी जाए. Very good, very good. Option C, through interaction with more knowledgeable than others. Next, the concept of more knowledgeable other MKO refers to what? A peer, teacher or adult who has higher ability and guides the learner. Na B, only the teacher in the classroom. Na C, only parents at the home. D, books and teaching aids. Aman, Rupali, Vijay, Satyavan, Rasmi Ranjan, Prakash. Very good. Everything. Option A is the correct answer. Next, which of the following best demonstrates learning in Vygotsky's perspective? Option A, a student memorizing multiplication tables without understanding. Option B, a child solving problems with the help of peer collaboration. C, a student copying notes from the blackboard. D, a child repeating alphabets after teachers. Option B is the correct answer. A child solving problems with the help of peer collaboration. Very good. ये गोटे दांत देखौची मु तो देखि पारुनी आ कोन करबी. हाउ हाउ मु जोकर भलिया देखाउची कि रे कागु. According to Vygotsky, cultural tools include what? Language, symbols and technology, reinforcement and punishment, only teaching aids, na heredity and maturation.
Yes, option A, that is language, symbols and technology. Next, which statement best summarizes Vygotsky's socio-constructivist theory? Option A, learning is an individual discovery. Option B, learning is purely biological. C, learning is socially mediated and culturally influenced. D, learning depends only on reinforcement. Very good. Learning is socially mediated and culturally influenced is the correct answer. अरे बाबा रे एमती का पेडागोजी क्वेश्चन जदि पढ़िबो ताले मो छुआ माने 24 क्वेश्चन रे 24 ही वेस्ट कर देबे. नेक्स्ट, कार्ल रोजर्स इज बेस्ट नोन फॉर व्हाट? बिहेवियरिस्ट थ्योरी, साइकोएनालिटिक थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी. ऑब्वियसली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. नेक्स्ट, कि कार्ल रोजर्स अप्रोच टू एजुकेशन emphasizes what? Teacher centered instruction. ना ऑप्शन बी लर्नर सेंटर्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ना ड्रिल एंड रोट मेमोराइजेशन, ना एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. learner centered and experiential learning. Next, according to Carl Rogers, meaningful learning occurs when teacher controls the classroom strictly. Option B, learner feels personally involved and responsible for learning. C, student memorize facts without questioning. D, rewards and punishment are frequently used. B. Yes, learners feels personally involved and responsible for learning. Okay. नमस्ते मैम, नमस्ते @ जहाँ भी तुम ना जहाँ भी. तो Carl Rogers describe the role of the teacher as controller of learning, facilitator of learning, evaluator only, authority figure only. कौन हवा? Very good. Option B, facilitator of learning. Next, which of the following is not a condition for effective learning according to Carl Rogers? Empathy, unconditional positive regards, congruence by genuineness, na punishment and reward. Very good. Yes, option D, that is punishment and reward. See how many Rasmi Ranjan? एठी option D दबा. punishment reward देके किछि भी तमे फोर्सफुली करि परिबो नाही छुआ सहित ताकू पूरा फ्री छाड़िबो. ओके. तो the humanistic approach views the learner as a passive recipient of knowledge, na machine responding to stimuli, a self-directed active individual striving for growth, na a blank set. Yes, very good. Option C, a self-directed active individual striving for growth. Rogers believed that the primary purpose of education is what? To transmit culture. Option B, to produce disciplined citizens. Option C, to foster self-actualization and personal growth. D, to prepare for examination. Yes, option C, to foster self-actualization and personal growth. Next, unconditional positive regards means what? Accepting the learner without judgment. B, always rewarding correct answer. C, ignoring mistakes of learners. D, accepting only successful students. Option A, accepting the learner without judgment. Very good. Next, which of the following teaching practices reflects Rogers' humanistic approach? Option A, teacher gives students choices in projects and supports their interests. B, teacher forces all students to do the same assignment. C, teacher emphasizes only grades and marks. D, teacher discourages personal reflection. Mickey, @ Prakash, Rupali, Santi, Dhiren. Very good everyone. Option A, teacher gives students choice in projects and supports their interest. तामाने सेमानंको स्पेस देले तांको रीडिंग करिबा पाई. Next, in Rogers' view, real learning is teacher directed and compulsory, evaluated mainly by external examination, self-initiated and lasting, na short-term memorization.
Yes, option C, that is self-initiated and lasting ever. Next, Carl Roger's approach is often called teacher-centered learning, person-centered learning, subject-centered learning, object-centered learning. Yes, person-centered learning. B is the right, person-centered. Subject-centered habani. Okay. तो केमती थिला आज तमर क्वेश्चन आंसर पार्ट 4 रो क्लास किछि यूजफुल हैला तम मानक पई आशा करूची किछि तो यूजफुल हेई पारी थिबो एंड आठु बेटर आमे सब किछि मु भाबुची कि आगुरु सब मिसई के आनुथली ये यूनिट 1 हैला नेक्स्ट क्लास रे आमे यूनिट 2 यूनिट 3 ए भली भाबरे कवर अप करबा सब सेशन नु क्लास जोटा कि तुम मानक हेल्पफुल होबा एंड सबु सेशन एटलीस्ट तमे जो लेवल ला एग्जाम रे क्वेश्चन आसुची से लेवल केमिति अटेम्प्ट करि परिबो बा ताठु आ केते लेवल हमको अधिक प्रिपरेशन दरकार से जिनसडा हमें जानि परिबा ओके तो थैंक यू एवरीवन देखा हवा नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट ट्यूसडे तो गुड लक समस्त बसी की पाठ पढ़ लगी जाओ जमी एसएसबी टीजीटी रे गोटे पोस्ट ही तमर रहिबा दरकार ओके नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट ट्यूसडे रे रहिबा रहिली धन्यवाद।